Hello, dear student. Once again, welcome back to our YouTube channel, NANDA Nursing Live. तमें निहाती भाव में जानी GNM नर्सिंग बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केते इंपोर्टेंट सो लास्ट वीडियो रे आमे बिहेवियरल साइंस अर्थात साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट टोटल 14th ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट कर सारी छे। जदि तुम मैंने से वीडियो देखी ना जल्दी जल्दी जाए वीडियो को चेक करंतु एवं निजको एग्जाम पे प्रिपेयर करंतु। ओके सो आज यही वीडियोटी खूब विशेष स्पेशल होगा जाऊँगी बिकज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड। आम गोटे कि 2 वर्ष नुहे बल्कि पूरा 15 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आंसर गुड़ा को डिटेल्स डिस्कस करवा। यही वीडियोटी तुम मानक अपकमिंग बोर्ड एग्जाम बहुत हेल्पफुल हेबो। सो वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। डिस्कशन स्टार्ट करने पूर्व मोर समस्त को गोटे रिक्वेस्ट जदि आपण यही चैनल को प्रथम थर पर आसचंती ताहले एबे ही नंदा नर्सिंग लाइव को सब्सक्राइब कर दियंतु आउ साइड रे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। आमे आपणक पई एही भली नर्सिंग रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट नर्सिंग रिक्रूटमेंट अपडेट रेगुलर नहीं कि आसचु। सो वीडियो माध्यम रे निश्चय आपण मन को अपडेट मिल जिवो। सो आई डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलतु स्टार्ट करवा आज डिस्कशन। फ्रेंड्स फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग रे 2002 रु 2025 पर्यंत आम डिस्कशन करवा क्वेश्चन आंसर 2002 रु 2025 मध्य जी भी क्वेश्चन अच्छी 15 इयर्स सब क्वेश्चन आम सॉल्व करवा 1 by 1। तो ये है 2002 एनुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस डियर फ्रेंड्स। तो देखिए तार शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन आसता देखो। क्वेश्चन नंबर 5 ए रे अच्छी फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक द फर्स्ट थिला देखो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स फ्रैक्चर्स ऑकर इन केस ऑफ चिल्ड्रेन इज डैश। फ्रैक्चर्स ऑकर इन केस ऑफ चिल्ड्रेन इज डैश। आंसर कौन हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। कौन हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन से ब्लीडिंग फ्रॉम द लंग्स डैश। ब्लीडिंग फ्रॉम द लंग्स हेमोप्टिसिस। HAEMOPTYSIS hemoptysis. So bleeding from the lungs dash. So bleeding from the lungs is called hemoptysis. Next fill in the blanks अच्छी a triangular bandage is used in dash cases. A triangular bandage is used in shoulder injury, elbow injury and hand injury रे यूज होची। ठीक अच्छे तो triangular bandage is used in shoulder injury cases। shoulder 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 injury case रे यूज होची triangular bandage। नेक्स्ट injury of bone with tissue and blood vessels। injury of bone with tissue and blood vessels is called compound fracture or open fracture। compound fracture it's called compound fracture। compound fracture लिख ले भी करेक्ट आंसर और अदरवाइज ओपन फ्रैक्चर भी लिखी पारिबो और ओपन फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर लिखिले भी करेक्ट। ठीक नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लीडिंग फ्रॉम द स्टोमक। सो ब्लीडिंग फ्रॉम द स्टोमक इज नोन एज हेमेटेमेसिस। HAEMATESIS हेमेटेमेसिस। ठीक ये थिला फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट अच्छे कलम ए एंड कलम बी को मैच कर बी रही कंबाइन एप्रोप्रिएट वर्ड्स ऑफ कलम ए विथ कलम बी। क्वेश्चन नंबर 5 बी रे कौन अच्छी कलम ए को कलम बी सहित मैच करार अच्छी। फर्स्ट अच्छी नर्सिंग
सो नर्सिंग क्या सहित मैच कर प्रोफेशन सहित नर्सिंग मैच विथ प्रोफेशंस वाइटल साइंस क्या सहित मैच हम टीपीआर एंड बीपी टीपीआर एंड बीपी दैट इज वाइटल साइंस देन एंटीसेप्टिक्स क्या सहित मैच कर एंटीसेप्टिक्स लोशन सहित मैच कर सो एंटीसेप्टिक्स कलम ए अच्छी कलम बी रे लोशन अच्छी तो फर्स्ट लोशन अच्छी लोशन सहित मैच करवा नेक्स्ट अच्छी वेनेडिक सॉल्यूशंस क्या सहित मैच करवा वेनेडिक सॉल्यूशंस मैच करवा सुगर टेस्ट सहित वेनेडिक सॉल्यूशन मैच करवा सुगर टेस्ट सहित देन एसएनए अच्छी एसएनए हूँ गोटे यूनिट ठीक स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन यूनिट सो यूनिट सहित कनेक्ट हम देन इवापोरेशन अच्छी देन इवापोरेशंस कौन इवापोरेशन इज स्पिरिट ठीक नेक्स्ट मे 12 अच्छे मे 12 रे नर्सेस डे अच्छे इंटरनेशनल नर्सेस डे हुए मे 12 देन स्पूटम एग्जामिनेशन क्या सहित मैच हम AFB सहित एसिड फास्ट बैसिलस सहित देन पल्स अच्छी डियर फ्रेंड्स रेडियल आर्टरी तो पल्स क्या सहित मैच कर रेडियल आर्टरी सहित एतिक कलम ए एंड कलम बी मैच कर तो नर्सिंग साइड रे एरो मार्क दी लिखबार अच्छी वाइटल साइन एरो मार्क देखिए लिखबार अच्छी एंटीसेप्टिक्स एरो मार्क देखिए लिखबार अच्छी कलम बी रे कौन कौन ता सहित मैच हम एमती मुझे तेढ़ा मेढ़ा एरो मार्क मारिक लिखली एमती करार ना एमती लिखली कन्फ्यूज हो जी भी तुमर पेपर करेक्शन करुवे तो कलम बी लिखिदेव कलम ए रे पूरा जहाँ देछि लिखिदेव देन कलम ए सहित कौ वर्ड मैच होची को टॉपिक मैच होची सीटा तुमको लिखबार अच्छी एंड आइडेंटिफाई करार अच्छी ओके नेक्स्ट देखिबा सी रे कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 5 रो सी रे कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 5 रो सी रे अच्छी राइट डाउन इन फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशंस सो 5 मार्क अच्छी मीन्स तुमको हाफ मार्क्स मिल गोटे जदि ठीक कर हाफ मार्क्स मिल ठीक अच्छे सो आम देखा ओडी मीन्स omni in die ओडी मीन्स omni in die ठीक अच्छे ओडी मीन्स ओडी मीन्स omni in die omni in die means once a day then 2 number अच्छे QID quarter in die means 4 times a day 4 times a day ठीक अच्छे नेक्स्ट 3 नंबर कौन अच्छी एचएस होरा समनी एचएस रो फुल फॉर्म है होरा समनी मीन्स एट बेड टाइम ओके नेक्स्ट 4 अच्छी ओजेड मीन्स आउंस OUNC आउंस नेक्स्ट 5th अच्छी AC means antecedent means before meals okay then 6 number अच्छी CM 6 number अच्छी CM 6 number अच्छी CM means craftsman CRAS crass MAN craftsman CM means
Crash means tomorrow morning. Tomorrow, tomorrow, tomorrow morning. ठीक, tomorrow morning. Crash means CM means craftsman. Then AD means Oreo Dextra. AD means Oreo Dextra. DEXTRA. Oreo Dextra means right ear. Means right ear. Right ear. ठीक, Oreo Dextra. Next, CC means chip complaint. CC means chip complaint. Chip complaint. Chip complaint. और क्यूबिक सेंटीमीटर लिख ले भी हम, और क्यूबिक सेंटीमीटर लिख ले भी करेक्ट. क्यूबिक सेंटीमीटर. AM. नेक्स्ट अच्छी AM. AM रो फुल फॉर्म इज एंटेमेरिडियम. 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 ठीक. एंटेमेरिडियम मीन्स बिफोर नून. बिफोर नून. Then PM, post meridiem. PM means post meridiem. ठीक, means afternoon. Afternoon. ठीक, हेतिके हेला फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन. ठीक अच्छे. पूर्व एमती आसला डियर फ्रेंड्स, आंसर द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, देन पर्पज ऑफ ओरल हाइजीन, देन या को चार चार्टा पॉइंट लिखबार अच्छे. चार चार्टा पॉइंट लिखले मार्क्स मिल. यहाँ आमको दरकार नहीं, यही सब क्वेश्चन आसू ना. जो जोड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब आम डिस्कसन करवा. तो ये थिला 2002 नवेम्बर मसरे एग्जाम होता एनुअल एग्जामिनेशन सर्ट क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट देखा 2007 एग्जाम होता नवेम्बर मसरे, और 2007 एग्जाम होता यार एनुअल एग्जामिनेशन. ठीक अच्छे. ये सब क्वेश्चंस थिला आम देखा, मेनली फोकस करवा सर्ट क्वेश्चंस उपरे. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 ए रे थिला फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन थिला द स्केल यूज्ड टू एसेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड. कौन हम? द स्केल यूज्ड टू एसेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड ग्लासगो कॉमा स्केल. जोटा GCS कौचे आम ग्लासगो कॉमा स्केल. ग्लासगो GLASGO ग्लासगो कॉमा स्केल. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन इनटू द स्पाइनल कैविटी इज कॉल्ड इंट्राथेकल इंजेक्शंस. It's called introduction of medicines into the spinal cavity is called intrathecal injection. Next questions. Next, fill in the blanks. Drugs used to relieve pain are known as analgesics. Drugs used to relieve pain are known as analgesics. Next, fill in the blanks. 1 tablespoon is equal to dash dram. So 1 tablespoon is equal to 4 dram. 4 dram means approximately 15 ml. Okay, approximately 15
15 ml. Okay, 1 tablespoon is equal to 4 gram. हमको 4 आंसर लिखिबार अछि. Next, fill in the blank. A substance that inhibit the growth of bacteria is called. A substance that inhibit the growth of bacteria is called antiseptic. Antiseptic. Next such questions, fill in the blanks. Acetic acid is used for testing urine for. Acetic acid is used for testing urine for albumin. Urine for albumin or protein. Albumin or protein. Okay. Next, fill in the blanks. The difference between axillary and rectal temperature. The difference between axillary and rectal temperature is 1 degree Fahrenheit. और जदि आम सेल्सियस रे देखिबा, जदि सेल्सियस रे देखिबा लिखिबा 0.6 डिग्री सेल्सियस. Okay. Next, fill in the blank. Presence of excessive amount of gas in the intestine is called flatulence. Flatulence. Presence of excessive amount of gas in the intestine is called flatulence. Flatulence. F-L-A-T-U-L-E-N-C. Flatulence. ठीक. Next अच्छी inflammation of the middle ear is dash. Otitis media. Okay. Otitis media have answer. Next, expulsion of stomach content via the esophagus and the mouth is termed as vomiting or emesis. कौन कहा emesis, E-M-E-S-I-S, emesis और vomiting लिखले भी correct answer. Vomiting, V-O-M-I-T-I-N-G, vomiting. Expulsion of stomach content via the esophagus and the mouth is termed as emesis or vomiting. जो word लिख ले भी correct answer. Okay, ये थिला fill in the blanks. Next देखिबा question number 5 रो B. Question number 5 रो B रे अछि write whether the following statements are true or false and correct if false. Okay, जदि false अछि ताको correct करियो ताहले हमको मार्क मिलिबो 5 मार्क मिलिबो मीन्स हाफ मार्क्स गोटे गोटे को ठीक कर ले. ओके, so first statement is left lateral position is used for giving rest to the patient. This is true statement. Okay, then second nail cutting is important to prevent ugliness. This is false. So nail cutting is important to prevent the spread of infection and injury. Nail cutting करले हम कौन infection to prevent रही पारिया, infection prevention करी पारिबा and spread of infections ही पारिबनी and injury मध्य हबार किछि chances नथिबो. ठीक अच्छे. Next third कौन अछि cardiac patients are given Fowler's bed. Cardiac patients are given Fowler's bed. This statement is true. Okay, next अच्छे fourth रे oxygen is administered at a rate of 4 liter per minute. This is true statement. Next, pulse rate more than 120 beats per minute is called bradycardia. Okay, this also false statement. This is actually tachycardia. ठीक, pulse rate more than 120 per minute is called bradycardia means false statements. इटा कौन हबो tachycardia हबो. Okay,
So less than 60 beats per minute हेले ब्राडिकार्डिया हम यदि एबव 100 होची कि एबव 120 होची ताहले टैकीकार्डिया हम। नेक्स्ट अच्छी 6th an abnormal collection of urine in the bladder is known as anuria. This is false. So abnormal collection of urine in the bladder is known as anuria means false, and correct केमती करेगा, this is known as urinary retention हवा. So an abnormal collection of urine in the bladder is known as urinary retentions. Urinary retention. ठीक, या जगह ब्राडिकार्डिया जगह कौन हम टैकीकार्डिया। ठीक, जोटा फॉल्स स्टेटमेंट अच्छे आम करेक्शन भी करने जेहेतु देती तुमको करेक्शन भी कर। नेल कटिंग इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। अगली इलनेस ना ये कौन हम इन्फेक्शन। ओके, बाकी तक ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट अच्छे 7th शार्प इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरिलाइज्ड बाय बॉइलिंग। फॉल्स। शार्प इंस्ट्रूमेंट आर स्टेरिलाइज्ड बाय बॉइलिंग। सो करेक्शन केमती करवा, शार्प इंस्ट्रूमेंट कौन करा केमिकल सॉल्यूशंस रे ताको स्टेरिलाइज करा जाउछ। ओके, शार्प इंस्ट्रूमेंट आर स्टेरिलाइज्ड by using of chemical solutions. Next, 1 liter is equal to 100 ml. 1 liter is equal to 100 ml. True statement. Then specific gravity of urine is 1010 to 1025. This is also true statement. Okay, this is also true statement. Next अच्छी turpentine stuff is applied for distension of the abdomen. This is also true statement. Okay, नेक्स्ट अच्छे गिव्स रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये सब रीजन विषय हमको जीवा दरकार नहीं, हमको ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स कलम ए कलम बी मैच ये सब क्वेश्चन होचे अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जमती क्वेश्चन सब से सब आम देखा। ओके, नेक्स्ट डिस्कसन करबा मार्च 2011 जो एग्जाम होता एनुअल एग्जामिनेशन सी क्वेश्चन विषय डिस्कसन करबा जहाँ आसला एग्जाम रे। ओके, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट आसला क्वेश्चन नंबर 5 रे अच्छी मार्क ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, नी चेस्ट पोजिशन इज यूज्ड फॉर गिविंग एनिमा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सो हमको मार्क करार अच्छे। ठीक अच्छे, नी चेस्ट पोजिशन इज यूज्ड फॉर गिविंग एनिमा। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट्स। ओके, सो आपको जो एनिमा देवार अच्छे ताहले की पोजिशन देवार अच्छे, लेफ्ट लेटरल पोजिशंस देवार अच्छे व्हेन वी आर गिविंग एनिमा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट यूरिन फॉर शुगर। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक, नेक्स्ट अच्छी लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड हाइड्रेशन। लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड हाइड्रेशन मीन्स false statement. Okay, it is called dehydration. Actually dehydration loss of fluid from the body hochi, it is called dehydration. Okay, not hydration. So this is false statement. Next statement, while applying capillary bandage a nurse must be stood in front of the patient. While applying capillary bandage nurse must be stood in front of the patient. False. So nurse
should stand behind the patients habo. So nurse must stand behind the patient habo. While applying Kaplan bandage, nurse must be stand behind the patients habo जेतले Kaplan bandage apply करा होछि. Next statement is respiration is counted in the knowledge of the patients. Respiration is counted in the knowledge of patients. This is false statement. It must be counted without the patient's knowledge to ensure accuracy. Okay, so बिना knowledge रे हमको count करार अछि respiration, patient respiration. Next, all rubber goods should be dried thoroughly. All rubber goods should be dried thoroughly. Actually, true statement. Okay, this is true statement. Next statement is AIDS is caused by viral infections. AIDS is caused by viral infections. This is true statement. Next statement is many tail bandage is used for perineum. Many tail bandage is used for perineum. This is false statement. Okay, so many tail bandage is used for perineum, not for perineum. It is used for abdomen. It is used for abdomen. Okay, not for perineum. Many tail bandage is used for abdomen. Next statement achi aire the infected articles of patients are called fomites. The infected articles of patients are called fomites. True. The statement is true. J रे अछि oral temperature is 1 degree higher than rectal temperature. Oral temperature is 1 degree higher than rectal temperature. This is false statement. So oral temperature is 1 degree lower than it. Higher जगह रे कौन हबो lower. Okay, हमको statement mark करो अच्छे false true लिखिबार अच्छी just for your knowledge मो discuss कर दो अच्छी. So oral temperature is 1 degree lower than rectal temperature हबो. तेणु एठी higher दीची जेहेतु एटा false statement हबो. Okay, next देखिबा answer in one word दीची. So answer in one word आसुनी dear friends, but फिर भी हमें discussion कर दबा. तो first कौन अच्छी statement loss of fluid in the body. So loss of fluid in the body means dehydration. Loss of fluid in the body is called dehydration. Next is bleeding from the stomach. Bleeding from the stomach is called hematemesis. HAEMATEMESIS. Hematemesis. Okay, HAEMATEMESIS. Hematemesis. The bleeding from the stomach is called hematemesis. An inflammation of the parotid glands. Inflammation of the parotid glands is called mumps. Or this is called parotitis. This is called mumps लिख ले भी ठीक और parotitis हबो. Next अच्छी difficulty in breathing. So difficulty in breathing is dyspnea. Difficulty in breathing is called dyspnea. Next अच्छी body temperature decreased below 95 degree Fahrenheit or 38 degree Celsius. Okay, this is hypothermia. कौन है सिंगल वर्ड रे hypothermia.
ओके ये थिला आंसर इन वन वर्ड ये सब आसुनी आंसर इन वन वर्ड आगु आसूला आगर पूर्व वर्ष एग्जाम मानक आसूला प्रीवियस जोटा 2011 पूर्वर से आंसर इन वन वर्ड भी आसूला 5 मार्क्स बट से सब आसुना फिल इन द ब्लैंक्स अच्छी कलम ए कलम बी मैच करको आछी एंड ट्रू फॉल्स आछी एंड एब्रिविएशंस आछी ये सब क्वेश्चंस आछी नेक्स्ट देखिबा एबे मैच द कलम ए विथ कलम बी ठीक अच्छे तो कलम ए रे कौन अच्छी कलम ए रे देखो आइसोलेशन एपिटैक्सिस स्पिग्मोमानोमीटर राइल्स ट्यूब मेलेना 12th में कॉन्स्टिपेशन एनोरेक्सिया रूल ऑफ 9 पल्स रेट 100 बीट्स पर मिनट कलम बी रे लॉस ऑफ एपेटाइट मेजल्स ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज बर्न टैकीकार्डिया आर्टिफिशियल फीडिंग प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द स्टूल लैक्सेटिव नर्सेस डे ब्लड प्रेशर तो कलम ए सहित कलम बी को टर्म गुड़ाक लिंक हो कनेक्टेड अच्छी कनेक्टेड विथ इच अदर तो आम फर्स्ट देखा आइसोलेशन आइसोलेशन कौन करा मिजिल्स रे आम आइसोलेशन करुचे ओके नेक्स्ट अच्छी एपिटैक्सिस एपिटैक्सिस एपिस्टैक्सिस मीन्स कि कौन अच्छी ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज देखो एपिस्टैक्सिस मीन्स ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज देन स्पिग्मोमानोमीटर कौन करा जाए ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करा जाए तो ब्लड प्रेशर अच्छी टर्म तो ब्लड प्रेशर सहित कनेक्टेड करदे देन राइल्स ट्यूब अच्छे राइल्स ट्यूब रे कौन कर फीडिंग दूचे तो ये देख आर्टिफिशियल फीडिंग बोली गोटे टर्म अच्छी तो आर्टिफिशियल फीडिंग हम या सहित लिंक हम कलम ए सहित कलम बी राइल्स ट्यूब रो कौन हम आर्टिफिशियल फीडिंग देन मेलेना मेलेना कौन मेलेना होची स्टूल और जो प्रेजेंस ऑफ स्टूल कलर ओके तो मेलेना कौन अच्छी प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द स्टूल प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द स्टूल हम नेक्स्ट 12th में कौन करा नर्सेस डे हुए आमर ठीक अच्छे तो नर्सेस डे हम नेक्स्ट कन्स्टिपेशन कन्स्टिपेशन हेले कौन करा लैक्सेटिव दिया हो ठीक अच्छे फर्स्ट ऑब्टेनिंग स्टूल पर लैक्सेटिव्स दिया हुए सॉरी ठीक कन्स्टिपेशंस में लैक्सेटिव्स दिया हो ओके एनोरेक्सिया एनोरेक्सिया सहित कोटा हम लॉस ऑफ ये कौन अच्छी लॉस ऑफ एपिटाइट अच्छे एनोरेक्सिया देख फर्स्ट अच्छी लॉस ऑफ एपिटाइट देन रूल ऑफ 9 रे कौन अच्छी बर्न कैलकुलेशन करा जाए बर्न पेशेंट बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेशन करा हो केते परसेंटेज बर्न होची देन पल्स रेट 100 बीट्स पर मिनट्स मीन्स टैकीकार्डिया ओके सो टैकीकार्डिया सहित लिंक्ड सो आइसोलेशन मिजिल्स हो गला देन एपिस्टैक्सिस ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज हो गला देन स्पिग्मोमानोमीटर आम कौन करुचे ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करुचे देन राइल्स ट्यूब रे आर्टिफिशियल फीडिंग मेलेना रे प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द स्टूल देन 12th में होची नर्सेस डे देन कन्स्टिपेशंस रे लैक्सेटिव्स दिया होची देन एनोरेक्सिया होची लॉस ऑफ एपिटाइट रूल ऑफ 9 जो बर्न पेशेंट रो कैलकुलेशन करा होची केते परसेंटेज ऑफ बर्न होची रूल ऑफ 9 को बेस करके देन पल्स रेट 100 बीट्स पर मिनट मीन्स टैकीकार्डिया ओके ये कलम भी जो ठीक ठाक करदे हमको 5 मार्क्स मिल जाव नेक्स्ट अच्छी फिल इन द ब्लैंक्स fill in the blanks with appropriate answer. So first fill in the blanks is the amount of urine passed by an average adult within 24 hours is called. So कौन कह जाए याकू यूरिन आउटपुट कह जाए ओके एवरेज द अमाउंट ऑफ यूरिन पास्ड बाय एन एवरेज एडल्ट विदिन 24 hours इज कॉल्ड यूरिनरी आउटपुट यूरिनरी output urinary output next अच्छी reaction of normal urine is slightly acidic slightly acidic okay next intramuscular injection is given in dash muscles intramuscular injection given in
gluteal gluteal or deltoid, gluteal or deltoid. Intramuscular injection is given in deltoid or gluteal muscles. Okay, जोटा लिखिले करेक्ट, गोटे लिखिबार अछि ठीक. नेक्स्ट देखिबा, नेक्स्ट fill in the blanks. Blood in the stool in term as dash. Blood in the stool is termed as melena. So melena भी लिखि परिबा, अदरवाइज हेमाटोचेजिया लिखिले हबो. तो हेमाटोचेजिया केमतिया ब्राइट रेड ब्लड जदि आसिला स्टूल रे ताहले हेमाटोचेजिया एंड ब्लैक टैरी स्टूल जदि आसिला मेलिना हैला. सो ब्राइट रेड ब्लड स्टूल कलर जदि आसिला ताहले हेमाटोचेजिया. ओके. और जदि ब्लैक और टैरी कलर स्टूल जदि आसिला ताहले ताको आमे कोन कहबा, मेलिना. ठीक. सो मेलिना लिखले भी हबो एटी, और हेमाटोचेजिया लिखले भी हबो, जोटा लिखले करेक्ट आंसर हेमाटोचेजिया, जोटा लिखले भी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट अच्छे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड प्लेंटी ऑफ वाटर प्रिवेंट constipation. Okay. Next is when the body temperature is raised to 105 degree Fahrenheit or above is called hyperpyrexia. Hyperpyrexia. Next is boiling point of water is dash. Boiling point of water is 100 degrees Celsius or 212 degree Fahrenheit. Next is a normal saline contains dash percent of sodium chloride. Normal saline contains 0.9% of sodium chloride. Next is drugs used to relieve pain are called. Drugs used to relieve pain are called analgesics. Exercise of foot is necessary to prevent. Exercise of the foot is necessary to prevent foot drop. FOOT, foot drop. ठीक. यदि गला fill in the blanks. Next अच्छे question number. नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ा अच्छी राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशंस 5 मार्क. ओके. सो एब्रिविएशन हमको ठीक ठाक करवार अच्छी. फर्स्ट देछि TDS. ओके. TDS रो फुल फॉर्म कौन? टेर डाई सुमेंडम. फुल फॉर्म कौन? टेर डाई सुमेंडम. SUMENDUM. Sumendum means 3 times a day. Okay. OD omnidae means once a day. HS hora somni means at bedtime. AQ means aqua. Then UNG means augmentum. AUNGUENTUM. Augmentum. और या को कौन कहते? ointment कहते. ठीक. RX रो फुल फॉर्म prescription. Next अच्छी LIQ means liquid.
देन पीसी रो फुल फॉर्म होची पोस्ट सेवम, पोस्ट सेवम, पोस्ट सेवम मीन्स आफ्टर meals. Okay, mist mist means moisture or mixture, mixture or mixture. Then tr means tincture, tincture, tincture. Okay, एतिकी है set questions of 2011. नेक्स्ट देखिए 2016 एनुअल एग्जाम रो क्वेश्चन आंसर. ओके, ये थला क्वेश्चंस तार आम देखिबा सेट क्वेश्चंस. तो देखिबा क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 रो ए रो आंसर इन वन वर्ड. एटा एबे आसु नाही, मु रिपीटेडली प्रीवियसली भी कहि सारछे, प्रीवियस एग्जाम जो डिस्कशन कर सारछे, किंतु फिर भी हमें जानिबा किछि टर्म सीखि जिबा जानि दबा या माध्यम रे. सो फर्स्ट ए रो अछि डिजीज कॉज्ड बाय डॉग बाइट. डिजीज कॉज्ड बाय डॉग बाइट्स मीन्स रैबिज हे जिवो. ओके, और ताको कोन कहउछन हाइड्रोफोबिया कहउछन. रैबिज और हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया. ओके, नेक्स्ट पेनफुल मिक्चुरेशंस इज डिसयूरिया, डिसयूरिया, पेनफुल मिक्चुरेशंस. देन अच्छे नेक्स्ट आंसर इन वन वर्ड ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, लिप्स, टंग एंड नेल इज, that is cyanosis, cyanosis, cyanosis. Next अच्छी mercy killing, mercy killings the single word कौन होगा euthanasia, euthanasia, euthanasia means mercy killing. Okay, next अच्छी the principle that governs right conduct, that is ethics. these are the single words जोटा आसु नहीं एबे खाली रिपीटेडली कहूची. फर्स्ट ट्रू फॉल्स आउची, फिल इन द ब्लैंक्स आउची एंड कलम्बी एंड एब्रिविएशंस आउची. तो फिर भी आम डिस्कसन करबा जेहेतु किछि किछि सिंगल वर्ड आम जानिदबा, किछि किछि टर्म जानिदबा या माध्यम रे. ओके, नेक्स्ट अछि मार्क ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. Mark true or false against each statement. First statement is respiration rate is the number of respiratory movements in 1 minute. True. This statement is true. Next, a total cessation of breathing is termed as orthopnea. False. Total cessations is apnea. Orthopnea is difficulty breathing while lying flat. ठीक अच्छे, जितेबले बेड शोई था से ऑर्थोपेनिया हो, डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो. टोटल सिचुएशन ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड और इज टर्म एज एपनिया. ओके, नेक्स्ट अच्छी नेक्स्ट स्टेटमेंट हाई टेम्परेचर फॉलिंग इन जिगजैग मैनर, हाई टेम्परेचर फॉलिंग इन जिगजैग मैनर टू नॉर्मल इज नोन एज लाइसिस. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. Okay, next actually hot water is used to remove blood stain. Hot water is used to remove blood stains. This is false statements. So cold water should be used. So hot water not used for remove blood stains. So hot water sets the protein in blood, so making stain permanent. जदि हमें hot water यूज कर देबा कौन है जीवा परमानेंटली सीटा रही जीवा. सो हमको कोल्ड वाटर यूज कर, कोल्ड वाटर इज यूज टू रिमूव ब्लड स्टेन्स. ओके, नेक्स्ट अच्छी नेक्स्ट स्टेटमेंट शार्प इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरिलाइज्ड बाय बॉइलिंग. शार्प इंस्ट्रूमेंट आर स्टेरिलाइज्ड बाय बॉइलिंग. फॉल्स. सो बॉइलिंग कैन डल शार्प एजेस. सो शार्प एजेस कौन हम तार धार कमिज. सो आम कौन कर केमिकल सॉल्यूशन कि कोल्ड
स्टिलेशन और हॉट एयर ओवन मेथड्स यूज करुचे सर्फ इंस्ट्रूमेंट्स पाई ओके so this is false statement next achi analgesics are drugs that induce sleeps analgesics are drugs that induce sleeps false analgesics रे कौन होची पेन को मिनिमाइज करुचे पेन रिलीफ एनालिसिस दौचे बट ड्रग्स दैट इंड्यूस स्लीप आर कॉल्ड hypnotics okay or sedatives next statement air mattress is used to prevent bed sore air mattress is used to prevent bed sore this is true statement next thumb should not be used to count pulse thumb should not be used to count pulse this is true statement next loss of appetite is termed as anorexia loss of appetite is termed as anorexia this is true statement next statement is vomiting is a sensation of sickness with inclination to vomit vomiting is a sensation of sickness with inclination to vomit means false statement so definitions of vomiting hoche the actual forceful expulsion of stomach contents so stomach content jaha bahari jivo seta hoche vomiting okay so this is false statement so 2016 रे मात्र जो कौन कौन क्वेश्चंस थिला सर्ट क्वेश्चंस वन वर्ड वाला थिला एंड फॉल्स ट्रू फॉल्स थिला बाकी नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी थिला एंड बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस एंड सर्ट नोट्स किछि थिला नेक्स्ट देखिबा 2017 रो क्वेश्चंस देखिबा डियर फ्रेंड्स ओके 2017 रो एनुअल एग्जामिनेशन रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा ओके तो यार फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट सेट क्वेश्चंस कौन थिला चूज द करेक्ट आंसर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थिला क्वेश्चन नंबर 4 रो बी रे ओके क्वेश्चन नंबर 4 रो बी रे कौन अछि चूज द करेक्ट आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन अछि द पल्स साइट इन द नेक इज कॉल्ड टेम्पोरल पॉप्लिटियल कैरोटिड रेडियल द करेक्ट आंसर कौन हबो कैरोटिड हबो पल्स साइट इन द नेक इज कॉल्ड कैरोटिड पल्स नेक्स्ट अछि डियर फ्रेंड्स 5 teaspoonful is equal to how many milliliter so 1 teaspoon equal to 5 ml okay 1 teaspoon equal to 5 ml so कितने दीजिए 5 teaspoonful is equal to how many milliliter 5 teaspoon full equal to how many milliliter तो कहते हैं वो 25 ml है वो करेक्ट आंसर so 25 ml 5 teaspoon equal to 25 milliliters okay next देखिए next MCQ so next is common site of pressure sore in lying position common sites of pressure sore in lying position is फर्स्ट ऑप्शन रे कौन अच्छी ईयर बी रे अच्छी स्कैपुला सी रे अच्छी सैक्रल रीजन एंड डी रे अच्छी ऑक्सीपुट सो करेक्ट आंसर इज सैक्रल रीजन सो कॉमन साइट्स ऑफ प्रेशर सोर इन लाइंग पोजीशन इज सैक्रल रीजन नेक्स्ट अच्छी नी चेस्ट पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए अच्छी लेफ्ट लेटरल पोजीशन ऑप्शन बी रे अच्छी लिथोटोमी पोजीशन ऑप्शन सी रे अच्छी गेनोफेक्टोरियल पोजीशंस देन डी रे अच्छी फॉलोअर्स पोजीशंस तो आंसर हम genufectoral positions so knee chest position is also known as genufectoral positions fifth MCQ which type of bandage is used for head injury which type of bandage is used for head injury so option A rachi many tail bandage option B rachi T bandage option C rachi Kaplan bandage option D rachi four tail bandage so answer haba Kaplan bandage okay correct answer haba Kaplan bandage next देखिए हमें fill in the blanks question number 5 रा ए रची fill in the blanks first fill in the blanks रची increase in the depth of respiration is known as hyperapnea ठीक
increase in the depth of respiration is known as hyperapnea. Known as hyperapnea. HYPERPNOEA. HYPERPNOEA. Hyperapnea. Increase in the depth of respiration is known as hyperapnea. Next lack of oxygen in the tissue is called lack of oxygen in the tissue is called hypoxia. Okay. Next fill in the blanks. The enema given to destroy intestinal parasites is dash enema. Enthelmintic enema. The enema given to destroy intestinal parasites is enthelmintic mintic MINTIC enthelmintic enema. Next fourth, in children calculation of drugs is done on the basis of dash, on the basis of body weight, on the basis of body weight or body surface area or body surface area. So body weight लिखले भी ठीक और बॉडी सरफेस एरिया लिखले भी ठीक. तो हमको कौन लिखवार अच्छे बॉडी वेट लिखवार अच्छे. नेक्स्ट इन मैस्लो हायरार्की ऑफ फिजियोलॉजिक नीड्स ऑफ द ह्यूमन नीड ऑफ ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी इज डैश. ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी इज ऑक्सीजन. हमको फर्स्ट ऑक्सीजन दरकार. सो दिस इज सर्वाइवल नीड्स. सो दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ह्यूमन beings or human need. Next write down the meaning of the following. So meaning सब अच्छी meaning गुड़ा का discussion करवानी ठीक. फेमाइन्स निमुलाइजेशंस ग्लूकोमीटर एनिमा सबलिंगुअल ये सब तुम क्लिनिकल साइड गला बेले सब जापर देखिपर ठीक. Famines means extreme scarcity of food, causing widespread hunger and often leading to increased mortality. It also famines. Inhalation is the process of administering medication in the form of inhalations into the lungs. Glucometer जाने कौन करुचे ब्लड ग्लूकोज को चेक करुचे to determine the blood glucose levels through the glucometers. Enema stool softening करने दिया होचे. This is the procedure in which liquid or gas injected into the rectum ठीक. Sublingual administering a drug by placing it under the tongue for rapid absorption in the bloodstream, that is sublingual ठीक अच्छे. sublingually आमे drugs दोचे medicines दोचे किछि ठीक. नेक्स्ट देखिबा write the full form of the following abbreviations ठीक अच्छे. so लामार full form कौन live against medical advice. live against medical advice. live against medical advice. medical advice. then अच्छी PPE personal protective equipment. personal protective equipment. personal protective equipment ठीक. नेक्स्ट अच्छे CPR. नेक्स्ट अच्छे CPR cardiopulmonary resuscitation. cardiopulmonary resuscitation. नेक्स्ट अच्छी OPD outpatient department. outpatient department. नेक्स्ट अच्छी OT
ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर। नेक्स्ट फुल फॉर्म ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट अच्छे NPO, नील पर ऑस, नील पर ऑस मीन्स नथिंग बाय माउथ, नथिंग बाय माउथ। ओके नेक्स्ट अच्छी PC, पोस्ट सीबम, पोस्ट सीबम मीन्स आफ्टर मील्स, आफ्टर मील्स। ओके नेक्स्ट अच्छी OD, अकुलस डेक्स्टर, अकुलस डेक्स्टर वंस डेली और ओमनी डाई भी कहुची याको ओकुलस डेक्स्टर और ओमनी डाई मीन्स वंस इन ए डे, वंस इन ए डे। ठीक ओडी मीन्स देन CC, चीफ कंप्लेंट और क्यूबिक सेंटीमीटर को कौन लिखिपर, क्यूबिक सेंटीमीटर लिखले भी हम और चीफ कंप्लेंट लिखले भी हम, चीफ कंप्लेंट लिखले भी करेक्ट आंसर हम। ओके ये 2017 एनुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। तो ये पर्यटन जब वीडियो को लाइक करना तो वीडियो को लाइक कर दिंतु एंड फटाफट वीडियो शेयर कर दे जमी समस्त घर पहुँची पार और चैनल सब्सक्राइब करना ताले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दियो। ओके तो जी भी डिस्कसन चलती तुम को हेल्पफुल होगा बोली मोर आशा। सो निहाती भाव में तुम अपकमिंग एग्जामिनेशन हेल्पफुल हो तो निहाती भाव में वीडियो लाइक करंतु एवं निज GNM फ्रेंड्स मान पाखु शेयर करंतु जमती से भी ये वीडियो हेल्पफुल हो पार। नेक्स्ट देखिए डियर फ्रेंड्स देख 2018 क्वेश्चंस। ओके 2018 क्वेश्चंस अच्छी आम देखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन एनुअल एग्जामिनेशन मार्च 2018 सर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पी रे जो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे विजुअल क्वेश्चन, विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डैश, विजुअल एग्जामिनेशन द बॉडी इज कॉल्ड डैश, that is inspection, inspection। Okay next question, pea soup stool seen in dash disease, pea soup stool seen in typhoid fever or enteric fever, typhoid fever और enteric fever जोटा लिख ले भी करेक्ट आंसर enteric fever। ओके टाइफाइड फीवर और एंटेरिक फीवर पी सूप स्टूल देखा जाए। ठीक अच्छे देन अच्छी थर्ड अच्छी ऑपरेशन थिएटर कैन बी स्टेराइल बाय डैश। तो ऑपरेशन थिएटर केमती स्टेरिलाइज करा होचे, ऑपरेशन थिएटर कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय फ्यूमिगेशंस, फ्यूमिगेशंस। ओके फ्यूमिगेशंस एंड फ्यूमिगेशन में कौन करा होचे फॉर्माल्डिहाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर दिया होचे सेथिरे जो वेपर आसीबो सेथिरे स्टेरिलाइज हो जिवो ऑपरेशन थिएटर। ओके नेक्स्ट देखिबा फोर्थ नंबर फिल इन द ब्लैंक्स। फोर्थ नंबर फिल इन द ब्लैंक्स कौन होचे एडमिशन इज एंटर अ पेशेंट्स इनटू हॉस्पिटल फॉर पर्पज। एडमिशन इज एंट्री ऑफ पेशेंट in a hospital for dash purpose, for therapeutic purpose or it may be diagnostic or medical purpose। ओके तो आम कौन लिखा थेराप्यूटिक पर्पज लिखा, आंसर इज थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक
पर्पज मीन्स ट्रीटमेंट पर्पज रे जड़े एडमिशन हो पेशेंट हॉस्पिटल को आसुची ओके नेक्स्ट अच्छी फिफ्थ एनोक्सिया इज एब्सेंस ऑफ डैश इन टिश्यू एनोक्सिया इज एब्सेंस ऑफ डैश इन टिश्यू ऑक्सीजन ऑक्सीजन एब्सेंस रे एनोक्सिया होची ओके एनोक्सिया इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू नेक्स्ट अच्छी क्वेश्चन नंबर 5 A write the full form of the following abbreviations DUR full form कौन discharge on request discharge on request next PMS post menstrual syndrome post menstrual syndrome next OM omni-man means every morning okay CM craftsman means tomorrow morning TOMORROW tomorrow morning okay next अच्छी INF means infusion और infections और इन्फेक्शन लिख ले भी हो इन्फेक्शन ओके MRV मैग्नेटिक रेजोनेंस वेनोग्राफी मैग्नेटिक रेजोनेंस वेनोग्राफी नेक्स्ट अच्छे स्टार्ट STAT start means starting STATIM starting means immediately ठीक तापर अच्छी ALT कौन अच्छी ALT means alternate means alternately means every other's day okay next अच्छी AA कौन अच्छी A ର full form ହେଲା अन्ना means of each then अच्छी OPD outpatient department ओके नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 5 रो बी रे अच्छी मार्क ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट फर्स्ट statement is don't induce vomiting after ingestion of acids ठीक and alkalis and kerosins this is true statement okay next is cold and calm skin is general sign of shock this is also true statements then third hemoptysis is presence of blood in urine hemoptysis the presence of blood in urine this is false statement so blood hemoptysis is presence of blood in urine is hematuria blood in urine is known as hematuria actually okay and it is blood in sputum is known as hemoptysis okay next
Fourth अच्छी the size of finger bandage is 5 centimeter length. This is false statement. False statements. Next अच्छी presence of excessive amount of gas in the intestine is called fluctuations. This is true statement. Next अच्छी oral temperature is less accurate the rectal temperature. True statement. Next अच्छी nursing process is problem oriented. True statement. Next अच्छी aphasia is loss of or absence of speech. And this is also true statement. Next अच्छी mental health in old age is not related to the previous life of persons. This is false statement. Mental health in old age is not related to the previous life of a person. False. Next statement is Benedict solution is used to test urine albumin. This is false statements. Actually this is used for sugar test. Okay, Benedict solution is used for sugar test. Ethical dear friends, question number 5 रो बी रा स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स रो सो ये थिला एनुअल एग्जामिनेशन 2018 रो सर्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट देखिबा डियर फ्रेंड्स 2019 एनुअल एग्जामिनेशन रो किछ क्वेश्चंस. ओके सर्ट क्वेश्चंस देखिबा एवं डिस्कशन करिबा. सो क्वेश्चन नंबर 5 रा ए रे अछि फुल फॉर्म कुछ एब्रिविएशंस अच्छी से एब्रिविएशन फुल फॉर्म देखिबा. तो देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 बी रे अच्छी डियर फ्रेंड्स देखि परुथबो फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स. ओके तो आम वन बाय वन देखिबा जहाँ लिखा है से तार आंसर को जाओनी डियर फ्रेंड्स मु जहाँ तुम को कहबी से गुड़ाक फॉलो कर से गुड़ाक लेख एवं पढ़. तो फर्स्ट अच्छी डैश इज द सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर टू रिड्यूस इन्फेक्शन. राइट ये कौन हम जो फिल इन द ब्लैंक्स रे हैंड वाशिंग हम. ओके ये कौन हम हैंड वाशिंग. नेक्स्ट अच्छी नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स द एक्ट ऑफ फिलिंग विथ हैंड इज कॉल्ड डैश. द एक्ट ऑफ फिलिंग विथ हैंड इज कॉल्ड पाल्पेशंस. ठीक अच्छे palpation. Next, the instrument used for measuring blood pressure is known as sphygmomanometer. Sphygmomanometer. Okay. Next, अच्छी a normal saline contains just % of sodium chloride. So 0.9%. 0.9% of sodium chloride. Next अच्छी ethics are characteristics of profession which is called dash code of ethics. Okay कौन हम code of ethics ये थिला fill in the blanks. Next अच्छी फिफ्थ ए रे अच्छी write the full form of the following abbreviations. 0.5 मीन्स हाफ मार्क 10टा फिल एब्रिविएशन देछि 10टा कले हमको 5 मार्क मिलबे एक्चुअली. ठीक अच्छे कहीं ना गोटे फुल फॉर्म को और गोटे एब्रिविएशन आम करले हाफ मार्क मिलबो. सो फर्स्ट अच्छी फर्स्ट एब्रिविएशन इज एनपीओ. एनपीओ फुल फॉर्म कौन नील पर ओएस. ठीक एनपीओ फुल फॉर्म नील पर ओस. ठीक नथिंग बाय माउथ. नथिंग बाय माउथ. ठीक नेक्स्ट अच्छे PROM. PROM the full form है passive range of motion. Passive range of motion. ठीक देन अच्छी SOS.
SOS C उपस्थित साई उपस्थित means if necessary in emergency, if necessary in emergency ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଉଛି emergency ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦିଆହେବ SOSରେ ରଖାହେଲା जनरली डॉक्टर सब SOS ରେ ରଖିଥାନ୍ତି କିଛି କିଛି ମେଡ଼ିକେସନ୍ସ ଠିକ୍ ତାପରେ ଅଛି BD ओके BD बिस डाए तार फुल फॉर्म होची बिस डाए मीन्स ट्वाइस ए डे ठीक नेक्स्ट अच्छी MEQ रो फुल फॉर्म कौन मिली इक्विवेलेंट ठीक ये थिला एब्रिविएशन नेक्स्ट एब्रिविएशन OM मीन्स एवरी मॉर्निंग और लैटिन वर्ड कौन होची ओमनी मैन OM रो फुल फॉर्म होची ओमनी मैन एंड कौन कहूँ आम एवरी मॉर्निंग कहूँ ठीक ओमनी मैन यार फुल फॉर्म ICU इंटेंसिव केयर यूनिट नेक्स्ट PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नेक्स्ट OT ऑपरेशन थिएटर नेक्स्ट ASB एंटी स्नैक वेनम ओके एतिक है एब्रिविएशन सब हमको गोटे गोटे ठीक कले हाफ मार्क मिलिबो ओके ये जो 2019 रा एग्जाम क्वेश्चंस रे नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन नंबर 5th रा बी रे मार्क ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट ओके हमको स्टेटमेंट गुड़ा को ट्रू फॉल्स देखिबार अछि फर्स्ट स्टेटमेंट इज amputation bed making is done for fracture patient false okay amputation beds means stump beds are specifically for patients who have had a limb removed to protect the stump fracture patient usually require a cardiac or fracture bed ठीक next splints are used to immobilize an extremity true this is true statement next the physical activity and regular exercise are good for hypertension this is also true statement and next poor ventilation of houses may cause respiratory troubles this is also true statement next a normal pulse rate of an adult is 72 to 80 beats per minute this is true statement next the disinfectant used for cold sterilization should be expensive disinfectant used for cold sterilization should be expensive is false statements ठीक नेक्स्ट अच्छी ग्लासगो कोमा स्केल रेफर्स टू ओनली आई ओपनिंग रेस्पॉन्स ग्लासगो कोमा स्केल रेफर्स टू ओनली आई ओपनिंग रेस्पॉन्स दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट ग्लासगो कोमा स्केल रे कौन देखा 3 पैरामीटर्स और 3 कंपोनेंट्स देखा आई ओपनिंग वर्बल रेस्पॉन्स एंड मोटर रेस्पॉन्स देखा नॉट ओनली आई ओपनिंग खाली ओके आई ओपनिंग सहित वर्बल रेस्पॉन्स एंड मोटर रेस्पॉन्स भी देखा ग्लासगो कोमा स्केल रे नेक्स्ट अच्छी Beta-statics are drugs that kill bacteria. False. So beta-statics
drugs inhibit the growth of bacteria, and vitricidal drugs are ones that kill them. Okay. Next, bandages should be applied when a casualty is sitting or lying down. Bandages should be applied when casualty is sitting or lying down. This is true statement. Next, numbness of tingling extremities is possible due to fracture. This is also true statements. Okay, not false. This is true statement because fractures can cause a nerve compression, okay, or vascular compromise leading to paresthesia. So numbness हबार chances अच्छी एवं tingling हबार chances अच्छी. Next देखिए 2019 रो supplementary examinations रो questions. Okay. मैं पूर्व देखिले एनुअल एग्जामिनेशन रो 2019 रो क्वेश्चंस एबे देखिबा हमें सप्लीमेंटरी एग्जामिनेशन 2019 एग्जाम रो क्वेश्चंस. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 रो बी रे देछि फिल इन द ब्लैंक्स, राइट. 4 रो बी फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स कौन होछि? नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज डीएस. नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 millimeter mercury mmHg. Okay, next breaking in the continuity of the bone is called dash fracture. Breaking in the continuity of the bone is called fracture. Next a lady with the name is dash. Lady with the name is Florence Nightingale. Florence Nightingale. Florence Nightingale. Next inflammation of the gums is called gingivitis. So inflammation of the DS is called gingivitis, means inflammation of the gums is called gingivitis. Then apnea means DS. Apnea means temporary cessation of breathing. Temporary cessation of breathing. Temporary cessation of breathing is apnea. Next question number 5 write the full form of the following abbreviation. NSAID. NSAID रो full form है non-steroidal anti-inflammatory drug. Non-steroidal anti-inflammatory drug. Anti-inflammatory INFLAMMATORY anti-inflammatory drug. Okay, NSAID non-steroidal anti-inflammatory drug. Then IPD inpatient department. Inpatient department. Okay, next NPO. Nil for us. Nil for us means nothing by mouth. Nothing by mouth. Okay, next ICU. Intensive care unit. Intensive care unit. Next CPR. Cardiopulmonary resuscitation. Cardiopulmonary resuscitations.
Okay. Next is PPE. PPE full form है personal protective equipment. Personal protective equipment. Personal protective equipment. Then अच्छी VVN. Vaccine vial monitor. Vaccine VSSCIN. Vaccine vial monitor. MONITOR monitor. ठीक. Next अच्छी RDM. RDM रो full form range of RDM नहीं ROM sorry ROM range of motion then अच्छी OD रो full form omni die or once daily omni die once daily. Okay. Next is the PR. PR means pulse rate or per rectum. PR means pulse rate or per rectum जोटा लिखले भी हम और पर रेक्टम जोटा लिखले भी हम RECTUM रेक्टम पर रेक्टम. PR मीन्स पल्स रेट और पर रेक्टम. नेक्स्ट अच्छी क्वेश्चन नंबर 5 रो बी रे मार्क ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट्स. फर्स्ट अच्छे टेपिड स्पंजिंग इज ए मेथड टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर. ठीक, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट अच्छे डाययूरेटिक्स इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन. ट्रू स्टेटमेंट. ओके. नेक्स्ट proctoscope is required to examine pelvis. Proctoscope is required to examine pelvis. This is false statement. So it is usually used to examine the rectum, not examine the pelvis. Okay. So proctoscope रे कौन करा होची examine the rectum or anal canal को examination करा होची, not for pelvis. Okay, तेणु false होगा. Then इसके needle is injected at an angle of 10 to 15 degree to the skin in subcutaneous injection. Needle is injected at an angle of 10 to 15 degree to the skin, that is subcutaneous injections. तो subcutaneous injection actually 45 to 90 degree दिया होची and 10 to 15 degree रे intradermal injection दिया जाउची. तो एटा false statement होबो. False statement. Next hospital bed when it's about to be occupied by a patient is termed as open bed. Hospital bed when it's about to be occupied by a patient is termed as open bed. Okay, this is true statement. Next difficulty in breathing on lying flat and it's relieved on sitting called orthopnea. This is also true statement. Next special mouth care should be done by using magnesium chloride. So special mouth care should be done by using magnesium chloride. This is false statement. False statement. So usually potassium permanganate or chlorohexidine or normal saline रे कौन करा होची माउथ केयर दिया होची. ओके. नेक्स्ट अछि vomitus containing blood is called hematemesis. Vomitus containing blood is called hematemesis. This is true statement. Next insufficient fluid is dehydration. Insufficient fluid is dehydration. This is also
True statement. Next, an agent that will inhibit the growth and development of microorganisms is sterilizations. This is false statements. Sterilization kills all life. An agent that inhibits growth is an antiseptic or bacteriostats. So an agent that will inhibit the growth and development of microorganisms is sterilization means false. Okay. Sterilization पूरा सब kills करिवो. Okay. Not only inhibit the growth and development, but inhibit the growth and development, that is antiseptics or bacteriostats କରୁଛି. Okay, sterilization पूरा kills of all life. This is false statements. ये थिला 2019 रो supplementary examination रो question answer. Okay dear friends, the supplementary examination of GNM board रो सरला completed हैला. Next देखिवा next question 2020 रो annual examination आमे देखिवा. So 2020 रो annual examination एबे देखिवा. So question number 4 रो B रे अछि fill in the blanks. And fill in the blanks देखिवा, full form देखिवा and true false देखिवा. Okay. This 20 marks is most important for examination point of view. So ये सब क्वेश्चन सब आम देखिकी जदि एग्जामिनेशन हॉल को जीवा, एग्जामिनेशन पूर्वर आम प्रिपेयर करके जीवा ताहले हमको एग्जामिनेशन हॉल रे किछि भी पैनिक हवा को पड़बनी, कार हेल्प नवा को पड़बनी, किए हेल्प करले कि देखिले कि कहि देले लिखिबी ए सब किछि भाबा नै, निजे पढ़ी के जीवार अछि. मु जिते भी प्रीवियस ईयर जति भी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करछि सब जदि पढ़ी देलो कार हेल्प भी दरकार हबो नै. तो निहाती भाबरे वीडियोटा देखिकी जाऊँ एग्जामिनेशन पूर्व को एग्जाम दवा पूर्व वीडियो देखिकी जीवा उचित. ओके, तो आम फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड अच्छी क्वेश्चन नंबर 4 बी रे वन बाय वन देखिबा. फर्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ नॉर्मल यूरिन इज डैश. रिएक्शन ऑफ नॉर्मल यूरिन इज डैश. स्लाइटली एसिडिक. स्लाइटली एसिडिक. ओके. Next questions, blood in the stool is termed as dash. So blood in the stool is termed as melena और हेमाटोचेजिया जोटा लिखिले भी ठीक हबो. ओके, आंसर इज मेलिना, MELENA मेलिना और हेमाटोचेजिया Okay. Next is bleeding from the stomach is known as dash. Bleeding from the stomach is known as hematemesis. Hematemesis. H A H E HEMATEMESIS. Hematemesis. ठीक, राइट. ब्लीडिंग फ्रॉम द स्टोमक इज नोन एज हेमाटेमेसिस. नेक्स्ट अच्छी, व्हेन टेम्परेचर फॉल्स इन ए जिगजैग मैनर इज नोन एज लाइसिस. ओके, कौन हम लाइसिस. नेक्स्ट अच्छी, ड्रग्स यूज टू रिलीव पेन इज कॉल्ड डैश. ड्रग्स यूज टू रिलीव पेन इज कॉल्ड एनाल्जेसिक्स. एनाल्जेसिक्स. ओके. नेक्स्ट देखिए फुल फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 5 ये रही राइट फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशंस. राइट फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशंस. फर्स्ट अच्छी एचएस. एचएस रो फुल फॉर्म है होरस ओमनी. होरस ओमनी दैट इज एट बेड टाइम. तार मीनिंग है एट बेड टाइम. ओएम ओमनी मैन. फुल फॉर्म है ओमनी मैन. नेक्स्ट O2. O2 मीन्स ऑक्सीजन. देन PRN प्रोरेनाटा. प्रोरेनाटा. PRN रो फुल फॉर्म प्रोरेनाटा. H means hora.
होरा मीन्स आवर, ठीक। QID, QID ର फुल फॉर्म है क्वार्टर इन डाई, क्वार्टर इन डाई मीन्स 4 times in a day. Then अच्छी CC, cubic centimeter, cubic centimeter. Then अच्छी OD, omni in die, omni in die. Next अच्छी stat, stat means starting, start full form है starting means immediately or at once, immediately. ON means omni knocked, omni knocked means every night, every night. Okay. One means omni knocked or that is known as every night. यार मीनिंग है omni knocked every night. Next is true false. Question number 5 रा B दे write true or false देछि, so statement देछि हम ताको आइडेंटिफाई करबा अछि कोडा ट्रू स्टेटमेंट कोडा फॉल्स स्टेटमेंट. ओके. So rubber goods should never be creased, folded or exposed to sunlight. This is true statements. Okay, this is true statement. Next अच्छे presence of albumin in urine is known as glycosuria. So false statement. So presence of albumin in urine is known as glycosuria. So it is not glycosuria, it is albuminuria. So glycosuria is glucose in urine means glycosuria. Okay. Next, hot water is used to remove blood stains. Hot water is used to remove blood stains is false. False. So cold water use करा हुए blood stain remove करने पाए. Next अच्छे vomiting is a sensation of sickness or inclination to vomit. Inclination to vomit. Vomiting is a sensation of sickness or inclination to vomit means false. Here statement sela false. Sharp instruments are sterilized by boiling. It a false statement. Sharp instrument को chemical ट्रीटमेंट करा जाए, केमिकल सॉल्यूशंस रे स्टिलेशंस करा जाए. ओके. नेक्स्ट अच्छे respiration is counted in the knowledge of the patients. So this is also false statement. Oral temperature is 1 degree higher than the rectal temperature. This is also false statement. Okay, rectal temperature is typically 1 degree Fahrenheit higher than oral. So this is false statement. Next, which individual of every patient should not be maintained. Individual of every patient should not be maintained. This is false statement. So patient individuality and privacy are core to nursing ethics. So this is not be maintained or individual of every patient should not be maintained means false हबो. So should be maintained हबो तो true हबो. Individual of every patient should be maintained. Patient रा privacy जहाँ भी अच्छी से सब हमको maintain कर रखी बार अच्छे not exposed to any others. Okay, ये अच्छी nursing ethics रे अच्छी. Next questions. So enema is given in left lateral positions. Enema is given is left lateral positions. This is true statement. Okay. Next अच्छे physical examination with the aid of stethoscope is known as auscultations. This is true statement. Okay, ये थिला 2020 रा annual examinations already completed हो गला. Then आम डिस्कशन करबा annual examinations
2022 ओके एनुअल एग्जामिनेशन जनवरी 2022 क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बी रे अछि कौन अच्छे फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स हमको लिखबार अच्छे फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट क्वेश्चन इज विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इंस्पेक्शन नेक्स्ट अच्छे पी सोप स्टूल सीन इन डैश डिजीज कंडीशन टाइफॉइड फीवर और टाइफॉइड डिजीज कंडीशंस ओके कौन हम टाइफॉइड नेक्स्ट अच्छे ऑपरेशन थिएटर कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय fumigation okay next question anoxia is absence of dash in the tissue anoxia nahi it anoxia okay anoxia is absence of oxygen in the tissue kon habo answer oxygen in the tissue next actually amputation bed may be called as dash bed stump bed STUMP stump bed amputation bed may be called as stump bed next अच्छी question number 5 रा A रे write full form of the following abbreviation AC means antecedent NHS means hora samne SOS means essay opus sit then OM means omniman then RX means prescriptions RX रो फुल फॉर्म होची प्रेस्क्रिप्शन नेक्स्ट देखिबा राइट ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन नंबर 5 रो बी रो क्वेश्चन नंबर 5 रो बी रो कोन होची राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट देची ट्रू और फॉल्स हमें देखिबा सो कोल्ड एंड कैमी स्किन इज जनरल साइन ऑफ शॉक दिस इज ट्रू स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट अच्छी हेमोप्टाइसिस इज प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन दिस इज फॉल्स blood in urine means hematuria or hemoptysis is blood in sputum रे जदि blood आसिला ताले हमें hemoptysis कहबा नेक्स्ट अछि axillary temperature is 1 degree Fahrenheit more than oral temperature this is false statement okay this is false statement so and axillary temperature is 1 degree Fahrenheit more than the oral temperature is false it is usually 1 degree Fahrenheit less than the oral okay less than the oral more than oral temperature not this is less than the oral temperature okay next actually nursing process is problem oriented true next actually genetic solution is used to test urine albumin this is false genetic solution used to test for sugar not for albumin okay sugar glucose by genetic solutions use kara hoche not for urine for albumin next achi column A and column B question number 5 ro C ro achi means the column A with column B column A ro achi lady with lymph cardiac table bed sore constipation autoclave column B ro achi insufficient fluid intake steam under pressure heart problem Florence Nightingale position change तो आम कलम ए सहित कलम बी को मैच करवा जो टर्म दिखाई जो वर्ड्स सब अच्छी ओके लेडी विथ द लैम्प किए फ्लोरेंस नाइटिंगेल सो कार्डियक टेबल हार्ट प्रॉब्लम पेशेंट को कार्डियक टेबल दिया जाए थे ओके से बेड सोर कौन हो पोजिशन जो चेंज न करवा बेड सोर हो नेक्स्ट कंस्टिपेशन कौन पे होची इनएडिक्वेट फ्लूइड इंटेक हेले कंस्टिपेशंस हो सो इनसफिशिएंट फ्लूइड इंटेक रे कंस्टिपेशंस देन ऑटोक्लेव स्टीम अंडर प्रेशर इट इज autoclave so these are the set questions of
जनवरी 2022 एनुअल एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस किछि थिला। नेक्स्ट देखिबा हमें सप्लीमेंटरी एग्जामिनेशन 2021 क्वेश्चंस देखिबा। ओके, सप्लीमेंटरी एनुअल एग्जामिनेशन सप्लीमेंटरी एग्जामिनेशन 2021 फर्स्ट देखिबा, देन आम देखिबा 2023 एग्जाम। ओके, तो ता पूर्व 2021 सप्लीमेंटरी एग्जाम्स जो क्वेश्चंस अवेलेबल अच्छी, जो 15 इयर्स क्वेश्चंस अवेलेबल अच्छी, जहाँ भी क्वेश्चंस अवेलेबल अच्छी साइट्स से सब क्वेश्चन डिस्कसन आम करुचे, जोटा आप एग्जाम हेल्पफुल हो निहती भाव में। ठीक अच्छे, तो आम फर्स्ट देखा क्वेश्चंस जो अच्छी क्वेश्चन नंबर 4 बी रे अच्छी फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ओके, the fill in the blanks with appropriate words which first questions अच्छी visual examination of the body is called inspections. Okay, question number 4 first questions visual examination of the body is called inspections. Inspection. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पी सूप स्टूल सीन इन डैश डिजीज कंडीशन। रिपीटेडली बार बार यही क्वेश्चन पचार माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यही सब क्वेश्चन को पूरा भाव से मन रखिबार छै। पी सूप स्टूल सीन इन डैश डिजीज कंडीशंस, तो टाइफॉइड डिजीज कंडीशन और टाइफॉइड फीवर रे यही पी सूप स्टूल होता है। टाइफॉइड TYPHOID टाइफॉइड डिजीज कंडीशन है पी स्टूल देखा जाए थे। ठीक, नेक्स्ट अच्छी ऑपरेशन थिएटर कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय। ऑपरेशन थिएटर कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय फ्यूमिगेशंस। फ्यूमिगेशन FUMIGATION फ्यूमिगेशंस। ओके, फ्यूमिगेशन बाय यूजिंग फॉर्मेल्डिहाइड यूज करके फ्यूमिगेशंस करा जाए इन ऑपरेशन थिएटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस Anoxia is absence of dash in the tissue. Anoxia is absence of dash in the tissue. Oxygen. Okay, कौन होगा आंसर? Oxygen. Next अच्छी amputation bed may be called as stump. Stump bed. STUMP. Stump bed. Okay, ठीक। नेक्स्ट आम देखा क्वेश्चन नंबर 5 ए अच्छी राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन। एसी। एसी रो फुल फॉर्म कौन? एंटीसीबम। एंटीसीबम। नेक्स्ट अच्छी एचएस रो फुल फॉर्म होरा सामने। होरा सामने। होरा सामने। SOS CSI opus seat. Opus SI opus seat. Then OM रो फुल फॉर्म है omni-man. omni-man. ठीक, नेक्स्ट RX रो मान है प्रेस्क्रिप्शन और टेक दो। ठीक है, तो हमको कौन लिखा अच्छे खाली प्रेस्क्रिप्शन लिखिदेले भी है राइट हो। ठीक अच्छे, सो ये थिला एब्रिविएशंस। नेक्स्ट आम देखा क्वेश्चन नंबर 5 रो बी रे अच्छी ट्रू और राइट ट्रू और फॉल्स। ओके, सो जो स्टेटमेंट देखिए हमको ट्रू और फॉल्स हमको आइडेंटिफाई करवार है। कोल्ड एंड कामी स्किन इज जनरल साइन ऑफ शॉक। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट अच्छी हेमोप्टिसिस इज प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट अच्छी एक्सिलरी टेम्परेचर इज 1 degree Fahrenheit more than oral temperature. This is also false statement. Okay, nursing process is problem oriented. This is true statement. Next, Benedict solution is used to test urine albumin. This is false statement. Okay, next अच्छी column A and with column B को मैच करो। मैच द column A with column B। क्वेश्चन नंबर 5 रो सी रे अच्छी। सो column A रे अच्छी lady with the lamb cardiac table bed sore constipation autoclave, and column B रे अच्छी insufficient fluid intake steam under pressure
Heart problem, Florence Nightingale position change. So lady with the lamp होची Florence Nightingale. ओके कार्डियक टेबल तो हार्ट प्रोब्लेम पेशेंट को कार्डियक टेबल दिया हो. देन बेड सोर जदि पोजिशन चेंज न करियो ताहले बेड सोर हबा अछि. कन्स्टिपेशन इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक. ओके नेक्स्ट ऑटोक्लेव दिस इज स्टीम अंडर प्रेशर. ठीक ये गला मैच द कलम में ए विथ कलम बी जदि आम ठीक ठाक करदेवे ताहले 5 मार्क्स. 5 marks ऐसे column B, then true false 5 marks, then the full form 5 marks and fill in the blanks 5 mark. ठीक total 20 marks. So 20 marks most important for GNM examination point of view. तो निहाती भाव में गोटे गोटे क्वेश्चंस को ठीक कले हमको एक एक मार्क मिले बुझीपार तो डियर स्टूडेंट्स. तो नेक्स्ट देखिए 2023 क्वेश्चंस एनुअल एग्जामिनेशन से कौन कौन क्वेश्चंस आसाला से क्वेश्चंस विषय में डिस्कशन करवा. ओके तो आम मेनली देखा फिल इन द ब्लैंक्स फुल फॉर्म ट्रू फॉल्स एंड कलम ए एंड कलम बी मैच. तो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 4 बी रे प्रेजेंस ऑफ सुगर इन यूरिन इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया. ग्लाइकोसूरिया. नेक्स्ट अच्छी ब्लड इन स्टूल स्टार मैच. ब्लड इन स्टूल स्टार मैच मेलेना और हेमाटोचेजिया. ठीक. डिजीज कॉज्ड बाय डॉग बाइट इज rabies. RABIES rabies. Next when temperature falls in zigzag manner it is termed as lysis. Next bradycardia is the pulse rate less than 60 beats per minute. 60 beats per minute. Next question is question number 5 A रे write the full form of the following abbreviations. Okay the following abbreviations तार full form हमको लिखिबार अछि. फर्स्ट अछि stat means starting STATIM startims means immediately. ON omni nocte means every night. Omni nocte means every night. CC cubic centimeter. Then QID quarter in die. Alt die means alternus diebus. Means every other day. Alt die means every other day. full form है alternus diebus. ठीक. नेक्स्ट देखिए राइट ट्रू और फॉल्स एगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 5 रो बी रे देखिए राइट ट्रू और फॉल्स एगेंस्ट ईच स्टेटमेंट 5 मार्क. तो गोटे गोटे स्टेटमेंट हमको ठीक कर ले ठीक से आइडेंटिफाई कर ले हमको 5 मार्क गोटे गोटे मार्क मिले 5टा क्वेश्चन को 5 मार्क. फर्स्ट अच्छे सर्व इंस्ट्रूमेंट आर स्टेरिलाइज्ड बाय बॉइलिंग. सर्व इंस्ट्रूमेंट आर स्टेरिलाइज्ड बाय बॉइलिंग. तो फॉल्स स्टेटमेंट. ओके बॉइलिंग करा जाए नहीं केमिकल ट्रीटमेंट करा जाए एंड ऑटोक्लेविंग पाई पठा जाए. जदि पठावर अच्छे ऑटोक्लेविंग पाई पठा हम हॉट. ओके सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट अच्छे एनिमा इज गिवन इन लेटरल पोजिशंस. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. ओके नेक्स्ट हॉट वाटर इज यूज्ड टू रिमूव ब्लड स्टेन फ्रॉम द लिनेन. This is false statement.
cold water यूज करा जाए. Then physical examination with the aid of the stethoscope is known as auscultation. This is true statement. Next is bleeding from the lungs is termed as hematemesis. Bleeding from the lungs is termed as hematemesis. False. Bleeding from the lungs is known as hemoptysis. Hematemesis is bleeding from the stomach. Okay. Bleeding from this lungs hele hemoptysis habo, or bleeding from the stomach hele hematemesis habo. Okay. Next, question number 5 ର C ରେ ଅଛି match the column A and column B. ओके, तो हमको मैच करले गोटे गोटे मैच ठीक से करले हमको गोटे गोटे मार्क्स मिलबो. तो फर्स्ट कॉलम ए रे नी चेस्ट पोजीशन, एनाल्जेसिक्स, इमोबिलाइजेशंस, गैंग्रीन, लुब्रिकेशंस. कॉलम बी रे स्प्लिंट, रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन, प्रिवेंट फ्रिक्शंस, रिलीफ पेन, डेथ ऑफ इश्यू. सो नी चेस्ट पोजीशंस, रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन करा जाए. ओके. नेक्स्ट होची एनाल्जेसिक्स. एनाल्जेसिक्स कौन करछे? रिलीफ पेन करछे. ओके, पेन को रिलीफ करछे. देन इमोबिलाइजेशंस. इमोबिलाइजेशन स्प्लिंट देले इमोबिलाइजेशन मोबिलाइज हेनी, इमोबिलाइजेशन से ही रहिबो. देन गैस गैंग्रीन अच्छी, डेथ ऑफ टिश्यू. डेथ ऑफ टिश्यू दैट इज गैंग्रीन. लुब्रिकेशंस. लुब्रिकेशन प्रिवेंट फ्रिक्शंस. लुब्रिकेशन का सहित कनेक्टेड प्रिवेंट फ्रिक्शंस. सो कॉलम ए एंड कॉलम बी मैच करदेले हमको 5 ରୁ 5 मार्क आसीबो ठीक ठाक भाव जदी करले आंसर. ओके. देन देखिबा 2023 रो एग्जामिनेशन रो क्वेश्चंस, सप्लीमेंटरी एग्जामिनेशन रो क्वेश्चंस. ओके, तो चलंतु क्वेश्चन नंबर 4 रो बी रे अछि फिल इन द ब्लैंक्स. ताको हमें सॉल्व करबा. क्वेश्चन नंबर 4 रो बी रे अछि फिल इन द ब्लैंक्स, वन बाय वन करी आंसर करबा. तो फर्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 mm. So 120/80 millimeter of mercury. Okay, next fill in the blanks is breaking in the continuity of the bone is called fracture. Next, a lady with the lamp is dash, Florence Nightingale. Okay, next question is inflammation of the dash is called gingivitis. Inflammation of the gums is called gingivitis. So next, last fill in the blanks questions. Apnea means dash. Apnea means cessation of temporary cessation of breathing is apnea, or absence of breathing is apnea. Temporary cessations of breathing or absence of breathing is called apnea. Next is column A and column B रा मैच करवार अछि. क्वेश्चन नंबर 5 रा A. क्वेश्चन नंबर 5 रा A रा अछि A, the match the column A and column B. So column A रा अछि lady with the lamp, cardiac table, bed sore, burn, hyperpyrexia, elbow joint, constipation, hunger taste, melena, autoclave. Okay, column B रे सेमती अछि stem in under pressure, black stool, Benedict Shelton, Florence Nightingale, heart problems, position change, rule of 9, then 105 degree Fahrenheit, figure of 8, insufficient fluid intake. This is so lady with the lamp linked with Florence Nightingale.
ओके कॉलम बी रे अछि फ्लोरेंस नाइटिंगेल देन कार्डियक टेबल हार्ट प्रोब्लेम पेशेंट्स को कार्डियक टेबल दिया होचे देन बेड सोर्स कौन अछि पोजीशन चेंज्ड करिवार अछि बेड सोर हेले देन बर्न पेशेंट रे कौन अछि रूल ऑफ 9 बर्न कैलकुलेशन करा होचे थ्रू द हेल्प ऑफ रूल ऑफ 9 formula then hyperpyrexia means above 105 degree Fahrenheit gele hyperpyrexia है then elbow joint रे कौन हम फिगर ऑफ 8 बैंडेज बांधेबार अच्छी ओके फिगर ऑफ 8 बैंडेज लगेबार अच्छी देन कन्स्टिपेशंस सो इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक हेले कन्स्टिपेशंस हम देन सुगर टेस्ट होची वेनेडिक्ट सॉल्यूशंस सुगर टेस्ट मेलिना होचे ब्लैक स्टूल होचे मेलिना होचे ब्लैक स्टूल लास्टली होची ऑटोक्लेव इट इज स्टीम अंडर प्रेशर ओके स्टीम अंडर प्रेशर होची ऑटोक्लेव नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 रो बी रे होची राइट डाउन द एब्रिविएशन फुल फॉर्म रो एब्रिविएशन रो फुल फॉर्म हमको लिखिबार अछि ओके SOS means SI opposite okay then OPD outpatient department next is RX prescription okay next is IPR interpersonal relationship next is TDS Terdai-Sumendum means 3 times a day TDS full formula Terdai-Sumendum यार मीनिंग 3 times a day ठीक ये थिला 2023 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन रो क्वेश्चंस आंसर 2025 एग्जामिनेशन होता एनुअल एग्जामिनेशन एवं सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होता तार क्वेश्चन आंसर देखा लास्टली तो ये है क्वेश्चन फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन GNM 2025 एग्जामिनेशन होता फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड दुटा सब्जेक्ट मिसिकी क्वेश्चन आसूँ तो यार क्वेश्चन आम भी डिस्कसन करवा तो आम क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 4 बी रे फिल इन द ब्लैंक्स ओके 5 मार्क आसला सो एटिक्यूटी इज ए कोड ऑफ डैश एटिक्यूटी इज ए कोड ऑफ कंडक्ट और बिहेवियर कोड ऑफ कंडक्ट और बिहेवियर लिखले भी पास मार्क so एटिक्यूटी इज ए कोड ऑफ कंडक्ट नेक्स्ट इज द मेन पर्पज ऑफ कार्डियक बेड इज टू रिलीव डैश कॉज्ड बाय कार्डियक डिजीज द मेन पर्पज ऑफ कार्डियक बेड इज टू रिलीव dyspnea 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 okay so dyspnea caused by cardiac disease okay so difficulty in breathing so main purpose of cardiac bed is to relieve dyspnea caused by cardiac disease next question is question number 4 c re dash examination is conducted on the body after death so autopsy examination is conducted on the body after death or postmortem जोटा कहाउची autopsy AUTOSPY autopsy और postmortem और कौन कहे postmortem
जोटा पीएम कहे ठीक पोस्टमार्टम or autopsy examination is conducted on the body after death. The next questions, next fill in the blank. Nose and throat infections may spread to the middle ear leading to death. That is otitis media. Okay, otitis media. Next अच्छी ear कौन अच्छी the temperature which exhibit a zigzag pattern is known as intermittent fever. Okay, the temperature which exhibits a zigzag pattern is known as intermittent fever. Intermittent fever, or sometimes it is known as remittent fever depending on the specific chart pattern. Okay, the temperature which exhibit a zigzag pattern is known as intermittent fever or sometimes a remittent fever कहा जाउछे डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न. ओके नेक्स्ट अच्छी क्वेश्चन नंबर 5 रो ए रे राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन 0.5 into 10 10टा देछि फुल फॉर्म और 10टा एब्रिविएशन देछि तार फुल फॉर्म लिखिबार अछि गोटे को हाफ मार्क्स. ओके 0.5 मार्क्स. तो ओपीडी रो फुल फॉर्म हैला आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट. ओके outpatient department. Then WHO, World Health Organization, World Health Organization. LAMA, Leave Against Medical Advice, Leave Against or Left Against, जोटा लिख ले हो Leave Against medical advice. Next is CPR, cardiopulmonary resuscitation, cardiopulmonary resuscitation. Then देखिबा next abbreviations. PPE, personal protective equipment, personal protective equipment. Next is ICU, intensive care unit, intensive care unit. Okay, CC, chief complaint or cubic centimeter लिख ले ठीक, और चीफ कंप्लेंट लिख देले भी राइट है. जो IPR, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, interpersonal relationship. QID, quarter in die, means 4 times a day. QUARTR, quarter in die. NPO, nil per OS, means nothing by mouth, Okay, next है true or false. Next true or false देखिबा, जो स्टेटमेंट दिया है ट्रू और फॉल्स आम देखा. ठीक अच्छे. फर्स्ट स्टेटमेंट अच्छे अस्कल्टेशन है लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द बॉडी. सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट विथ द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप आम कौन करुचे बॉडी साउंड शुणुचे. ओके नेक्स्ट डेटल इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. डेटल इज
Dettol is used for selection of instrument. False. Okay, so Dettol is an antiseptic or disinfectant for skin and surface only. So instruments require sterilization and autoclaving. Instruments को sterilizations ପାଇଁ autoclaving दरकार. Okay. Next is the presence of blood in cough is called hematuria. Presence of blood in cough is called hematuria. This is false statement. Okay, so blood in cough is called hemoptysis or hematuria in blood. Hematuria means blood in urine. Okay, blood in urine means hematuria, and blood in cough is called hemoptysis. Okay, fine. Next statement is Benedict's test is used to detect reducing sugar in urine. This is true statement. Okay, Benedict solution Benedict test माध्यम रे कौन होची डिटेक्ट करा होची sugar in urine. Next, the data observed by the nursing officer is called objective data. This is true statement. Okay, so objective data is what the nurse observes or measures, that is science. So the data observed by the nursing officer is called objective data, that is true statement. Okay, it is true statement. Next, pyrexia is also known as hypertension. False statement. This is false statements. Pyrexia is fever and hypertension is high blood pressure. Okay. Next, the normal respiration rate of an adult is 20 to 24 per minute. This is false statement. False statements. So normal adult respiration rate, typically 12 to 20 breaths per minute. So 20 to 24 minutes ଦେଇଛି ସେ ପାଇଁ false ହେବ. Next ଅଛି good body mechanics prevent fatigue and strain. Good body mechanics prevent fatigue and strain. Okay, यार statement कौन right है ना भूल है? This is true statement. Next is detection of ketone bodies in the body fluid is observed in acidosis. This is also true statement, right? Next, otoscope is used for rectal examinations. This is false statements. Okay, otoscope is for ear examinations and proctoscope for rectal examination, right? Otoscope is for ear examinations and rectal examinations with the help of proctoscope. ठीक, that's why this is false statement. Next देखिवा 2025 रो सप्लीमेंटरी एग्जामिनेशन. ओके डियर फ्रेंड्स, एबे यार एग्जामिनेशन हेथिला एवं एही क्वेश्चंस मध्य देखिकी जीवा उचित. एग्जामिनेशन पूर्व लास्ट एग्जाम हेची तो कौन कौन क्वेश्चंस आइथिला देखि पारथुबो. तो मेनली हमें कौन करिबा शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कशन करिबा, राइट? शॉर्ट क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स फॉर बी रे अछि. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स देखिबा, देन देखिबा डियर फ्रेंड्स, देखिबा एब्रिविएशंस देखिबा, फुल फॉर्म देखिबा एंड ट्रू फॉल्स देखिबा, राइट? तो फर्स्ट आम देखिबा एब्रिविएशंस डिस्कशन करिबा. 10टा एब्रिविएशंस सॉरी 5टा एब्रिविएशंस अच्छी एंड 5टा ट्रू फॉल्स अच्छी, देन 10टा फिल इन द ब्लैंक्स अच्छी. 10टा रु 10टा ठीक कले 10 मार्क मिलिबो. फर्स्ट क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स रो फर्स्ट क्वेश्चंस, 10% ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन नॉर्मल सैलाइन. सो 0.9%.
ठीक अच्छे डैश नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ शुगर यूरिन सो ग्लाइकोसुरिया इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ शुगर यूरिन ग्लाइकोसुरिया indicates presence of sugar urine. Next, fill in the blanks. Dash is prevented by intake of dietary fibers. So constipation is prevented by intake of dietary fiber. Answer कौन हो? Constipation. Constipation. Okay. Next, fill in the blanks. Dash indicates presence of blood in stool. Melena MELAENA मेलाइना ठीक MELAENA मेलाइना indicates presence of blood in stool. This is indicates that presence of blood in stool means melina. Dash means total cessation of breathing. Apnea means total cessation of breathing. APNOEA apnea. Apnea means total cessation of breathing. Disease caused by dog bite dash ravage. Disease caused by dog bite is ravage. ठीक नेक्स्ट अच्छी पेनफुल मिक्चरेशन इज कॉल्ड डैश पेनफुल मिक्चरेशन इज कॉल्ड डिसयूरिया ठीक डिसयूरिया नेक्स्ट अच्छी ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन लिप्स टंग एंड नेल इज कॉल्ड डैश bluish discoloration of skin lips tongue and nail is called cyanosis. Next question ache fill in the blanks. Vomiting sensation is called dash nausea. NAUSEA nausea. Next last fill in the blanks. Bleeding from the lungs is called hemoptysis. ठीक ब्लीडिंग फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड हेमोप्टिसिस. ये है क्वेश्चन नंबर 4B रो फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट देखिबा हमें राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशंस. क्वेश्चन नंबर 5 रो ए देखिबा. ओके 5टा को 5 मार्क. First full form is OD. Omni-die means once daily. Okay, omni-die once daily. SOS SI opus sit. opus sit. C opus sit और SI opus sit को SOS रो फुल फॉर्म है. तो SOS मीन्स इफ नेसेसरी और इफ नीडेड आम पेशेंट जो रिक्वायर्ड है कि नीड है ताहले आम दौचे. देन OM रो फुल फॉर्म ओमनी मैन. ओके ओमनी मैन. Omnimens means every morning. ठीक. PC post sebum means after meals. Okay, after meals. Next है MEQ milli equivalent. नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन नंबर 5 रो बी राइट ट्रू और फॉल्स. ठीक 5टा स्टेटमेंट देछि 5टा स्टेटमेंट को आंसर मार्क यदि आम आइडेंटिफाई करि परला कोटा ट्रू कोटा फॉल्स. ठीक अच्छे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द thumb should not be used to count pulse.
the thumb should not be used to count pulse. This is true statement. Okay. Next, antibiotic is used as the drug of choice for fungal infections. This is false statement. So antibiotic treat bacterial infections, not for fungal infections. Fungal infection fine antifungals use करा जाए and treat करा हुए fungal infections को. Next अच्छी hand washing is the most important measure to prevent infections. Hand washing is the most important measure to prevent infection. This is true statement. Okay. Next अच्छी hemoptysis means bleeding from stomach. Hemoptysis means bleeding from stomach. False. So hemoptysis means bleeding from the lungs or respiratory tracts, and bleeding from the stomach means hematemesis. Okay. Bleeding from the stomach means hematemesis, not hemoptysis. The bleeding from the stomach means hematemesis, not hemoptysis, and hemoptysis is bleeding from the lungs. Bleeding from the lungs. Okay. Next, a last statement. The use of artificial ventilations. The use of artificial ventilation with external heart compression is called cardiopulmonary resuscitations. Okay. यार statement कौन हवा, ट्रू हवा ना फॉल्स हवा? दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. ओके. सो डियर फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट, ये वीडियोटी तुम मानक अपकमिंग जीएनएम बोर्ड एग्जाम पे बहुत हेल्पफुल हेबो. सो वीडियोटा को निहाती भाव में स्टार्टिंग रु एंडिंग जाए कंप्लीटली वाच कर. रिपीटेडली क्वेश्चंस अच्छी, रिपीटेडली से क्वेश्चंस को देखला परे निहाती भाव में ब्रेन रे सेव हो जिवो एवं मन रहिबो, जहाँकि अपकमिंग एग्जामिनेशन हॉल रे तुमको किसी कन्फ्यूजन हेनी, किसी वरीड होगा पड़ोनी. सब क्वेश्चंस रे आंसर आसीबो. निहाती भाव में वीडियोटा जदि देखिबो निहाती भाव में तुम अपकमिंग एग्जामिनेशन पाई हेल्पफुल हो जिवो. तो निहाती भाव में जदि वीडियो हेल्पफुल होइछि एवं वीडियो तुम पाई एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होती ताले निहाती भाव में वीडियो को लाइक कर दियो एवं शेयर कर दियो, बहु मात्रा शेयर कर, जमी समस्त जीएनएम स्टूडेंट मानक पाखे पहुँची पारिबो. एवं चैनल जब सब्सक्राइब कर ना ताले चैनल को सब्सक्राइब करके पाखे थोड़ा बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु. एमतिया नर्सिंग ओरिएंटेड क्वेश्चंस, नर्सिंग रिलेटेड रिक्रुटमेंट को अपडेट आम चैनल माध्यम मिल जाव. निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब करके रखम. पुणी थे देखा नेक्स्ट सब्जेक्ट सहित. आजकल ये वीडियो एतिकी, नेक्स्ट वीडियो पुणी देखा नेक्स्ट सब्जेक्ट जीएनएम रो. एमती भल भल नर्सिंग रिलेटेड कंटेंट पाइबा निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब करंतु. इट्स माय रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग. सो आजकल वीडियो एतिकी. Fearless.